Hello students, welcome to Dhal sir classes. Previous lecture we started with what is hypothesis, परिकल्पना उपकल्पना कैसे आप समझते हो. So today we discuss the different types of hypothesis. जो परिकल्पना है उसका क्या क्या प्रकार है और कौन सी hypothesis आपको किस तरीके की रिसर्च की बात करता है. So usually अगर if you find that hypothesis basically directional एक नॉन डायरेक्शनल एक दिशा की बात करता है दिशात्मक और एक बिना दिशा या नॉन डायरेक्शनल जिसको कहते हैं और दिशात्मक. So that means hypothesis which gives a stipulate direction and that also it is expected the relationship or the differences. जब आपकी रिसर्च की हाइपोथेसिस एक दिशा की तरफ जो आपने उम्मीद रखा है एक्सपेक्ट किया है उसकी रिलेशनशिप को डिफरेंसेस को क्रिएट करता है. सो दैट मीन्स इट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. दैट मीन्स देयर इज ए रिलेशनशिप व्हिच इज पॉजिटिव रिलेशनशिप between the variables, between the ideas you have taken to create your research output. जैसे फॉर एग्जांपल स्टडी हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स और एकेडमिक अचीवमेंट, ये दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव, that means it gives a directional hypothesis. Suppose the study habit or the hard work or the disciplined habit of the students has a direct proportion to academic achievement, so that gives a directional hypothesis. जो दिशात्मक परिकल्पना या उपकल्पना होता है वो दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप करता है जो आपकी वेरिएबल्स है और जो वेरिएबल्स को साथ जो पॉजिटिव सकारात्मक संबंध को बताता है. सो दैट बिकम्स द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. एंड दिस हाइपोथेसिस स्टिपुलेट्स दैट स्टूडेंट्स with good study habits will have high academic achievement. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्या जो अच्छे स्टूडेंट्स जिसके पास है अच्छी आदतें हैं और उस अच्छी आदतों की वजह से उनकी एकेडमिक अचीवमेंट हो रही है. सो यू कैन प्रूव दिस दैट विथ योर रिसर्च दैट आपकी रिसर्च में अगर आपने देखा जो ऐसे स्टेटमेंट को प्रूव करना है एंड यू आर टेकिंग ऑल द सैंपल्स ऑफ योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑल द स्टूडेंट्स एंड यू आर प्रूविंग दैट जितने स्टूडेंट्स के पास गुड हैबिट्स है उन लोगों की एकेडमिक अचीवमेंट ज्यादा है. सो दैट इज द hypothesis which is directional. It is giving a positive relationship between the academic achievement and study habit among the students. When it is non-directional, then it doesn't specify the expected differences or relationship between the variables. जब भी आपकी परिकल्पना या उपकल्पना अपनी जो उम्मीद रखा है जो एक्सपेक्टेड है रिलेशनशिप या डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स उसको अगर आप स्पेसिफाई नहीं करता है या बताता नहीं है सो दैट इट बिकम्स द नॉन डायरेक्शनल. सो दैट मीन्स अगर आप कहेंगे जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं academic achievement with respect to the students enrolled in open universities or distance education universities और the conventional physical जिसमें हम क्लासरूम अटेंड करके, तो ये दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप को हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाते हैं so that becomes the non-directional research hypothesis. So that means there is a difference in the academic achievement of weird students enrolled in open and conventional universities is a non-directional research hypothesis. Why? Because it doesn't give that relationship or the differences between the two types of students, one in open universities, another in conventional universities. So though this hypothesis has a relationship with the idea of research work, but it doesn't stipulate that difference or the similarity is between two different variables. So the direction of the difference is not specified. That is why it is not stipulated. So that means जब आपकी हाइपोथेसिस की दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो डिफरेंस है
उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाता है और एक एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप को बता नहीं पाता है, so that becomes the non-directional hypothesis. The hypothesis which is not able to show the difference as per your expectation between the academic achievement and the students enrolled to different type of universities. Then another hypothesis you might have heard, research hypothesis or alternate hypothesis and null hypothesis. Research hypothesis basically the normal or the alternative hypothesis which establishes the relationship between two or more variables. जब आपकी शोध में different variables के बीच में जो आपकी tentative explanation या tentative statement है वो relationship को बताता है या positive या predict करता है, so that becomes the research hypothesis, which is definitely giving a positive relationship or an expected relationship between two or more variables. अगर आपकी hypothesis different variables को रिलेट कर पाता है, प्रूफ करता है या उसको एक स्टेटमेंट जो आपको वेरिएबल्स को बताने की जो एक एक्सप्लेनेशन को प्रेडिक्ट कर सकता है, so that becomes the research hypothesis. That means a research hypothesis describes what operations were conducted and tools were used to measure each variable, and thus the focus of a hypothesis depends upon the target populations. तो यहाँ पे टारगेट पॉपुलेशंस को आपकी हाइपोथेसिस एक रिलेशनशिप को क्रिएट करता है और वो आप जस्टिफाई कर पाते हो एंड योर रिजल्ट्स आर वेरी मच एक्सप्लेनिंग द टारगेट पॉपुलेशन. तो आपने अपने शोध कार्य में अगर आपके वेरी हाइपोथेसिस के माध्यम से उस पॉपुलेशन को रिलेट कर पाए जो टारगेट पॉपुलेशन जिसके ऊपर आपने शोध किया, देन इट बिकम्स द रिसर्च हाइपोथेसिस. So that means research hypotheses are the cause of creating a statement or a theory which gives a new knowledge that can be helpful for further research. तो आपकी हाइपोथेसिस अगर उस पॉपुलेशंस को टारगेट पॉपुलेशन की रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर पाता है, so that becomes the research hypothesis. Then when you find a null hypothesis means you don't find any relationship between the variables. The hypothesis is not able to be proved or it is like a neutral type of hypothesis. There is no effect on your population. जो target population के ऊपर आपने research किया with respect to your hypothesis when there is no effect. तो ये जो न्यूट्रल रिलेशनशिप को क्रिएट कर रहा है या नो डिफरेंस को क्रिएट कर रहा है या नो रिलेशनशिप को प्रूव कर रहा है, so that becomes the null hypothesis. So that means the hypothesis which indicates no difference or no relationship with your variables or target populations. तो जिस पॉपुलेशन के ऊपर आप काम किया उसके हाइपोथेसिस का कोई लेन देन नहीं, उसके साथ कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, so that hypothesis becomes the null hypothesis. Why it is called also statistical? Because you are testing the hypothesis by your data with a probability theory. तो ये जो थ्योरी probability theory के माध्यम से आप उस रिलेशनशिप को प्रूव करना चाहते हो, establishing the relationship between the population and your statement, so that becomes that the statistical hypothesis. that आपकी जनसंख्या जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन और आपकी हाइपोथेसिस ये दोनों के ऊपर क्या एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट है, that becomes, if there is no effect, so that is null hypothesis. Whereas alternative hypothesis, this is called the operational statement of research hypothesis, जो आपको प्रेडिक्ट करता है और जो आपको जो भी हाइपोथेसिस आपने क्रिएट किया उस रिलेशनशिप को आपने एस्टैब्लिश कर पाए. So if you are putting alternative hypothesis for your research, then you are predicting the relationship between the variables and the population target populations. By rejecting or accepting null hypothesis, that you are arriving
that you have to create a new research hypothesis. That means आपने वो hypothesis को prove नहीं कर पाया या relationship को establish नहीं कर पाया, so you are concluding that we require another alternate hypothesis. तो हमारे पास एक alternate hypothesis create होता है because we rejected the hypothesis which is null hypothesis. Thank you for watching Null Sir classes.